जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा निता है गौरंग जय निता है गौरंग निता है गौरंग जय निता है गौरंग निता है गौरंग गौर हरि निता है गौरंग गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि नादि अधिहारी गौर हरि कलि युग अवतारी गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि पतित पावन गौर हरि कलि युग अवतारी गौर हरि नादि अधिहारी गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गुरु प्रेमानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज शुक्रवार के दिन श्री बलराम देश इस्कॉन से श्री कृष्ण बलराम गौर निताय श्री राधा बैरिणेश्वर नरसिंहदेव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और श्री प्रभुपाद के शरण में बैठकर पतित पावन भगवान श्री गौर हरि की अति उदार लीला विश्व प्रसिद्ध विद्वान बृहस्पति के अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद जिस प्रकार से किया, इस प्रसंग को हमने 2 दिन पहले सुबह मॉर्निंग क्लास में शुरू किया था। थीम ये है कि भगवान श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया, महाप्रभु ने संन्यास लिया। मुख्य उद्देश्य ये था कि उनके प्रचार को सामान्य लोग समझें, स्वीकार करें और आदर पूर्वक एक्सेप्ट करें। और उन्होंने प्रचार का जो शुभ आरंभ किया वो बड़े वेदांतिस्ट जो प्रकांड विद्वान थे दक्षिण भारत के और वाराणसी के उत्तर भारत में वाराणसी निराकारवादी वेदांतियों का बहुत बड़ा गढ़ है और दक्षिण में श्रीपाद शंकराचार्य के अपने मठ हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में प्रभाव है निराकारवाद का। तो इन दोनों स्थानों के ऊपर मुख्य रूप से भगवान श्री गौर हरि ने सबसे प्रमुख, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में और प्रकाशानंद सरस्वती वाराणसी में, इन दोनों के साथ संवाद करके बातचीत। संवाद का मतलब है गुरु शिष्य के बीच में बातचीत, जिससे भगवत तत्व को जानना चाहिए। तो संवाद किया है और ये एक ऐसा उदाहरण है और उसमें जो सिद्धांत है वो हमारे प्रचार के लिए बहुत आवश्यक है। और श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रचार का मुख्य उद्देश्य था वो मायावाद का खंडन था, क्योंकि लोग बेचारे भोले हैं, बहुत सरल हैं और बड़े बड़े विद्वान सन्यासी उन लोगों को भ्रमित करके और भगवान से दूर ले जा रहे हैं, अपने आप को भगवान बताकर एक अंधकार में उनको उलझा रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत यहाँ स्थापित किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ रहे थे मध्य लीला के 6ठे अध्याय में सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार, और हमने यहां तक पूर्णाहुति उस दिन की थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु 18 नाला से अकेले बहुत ही तेज रफ्तार से तीव्र गति से भागते हुए भगवान श्री जगन्नाथ के आलिंगन करने के भाव से मंदिर में प्रवेश हुए
लेकिन भाव आवेश होने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। उस वक्त सार्वभौम भट्टाचार्य मंदिर में भगवान की इच्छा से थे और उन्होंने चौकीदारों और अपने शिष्यों की सहायता से उनको सुरक्षा पूर्वक अपने निवास स्थान पे लाए और फिर देखा कि उनका सांस चल नहीं रहा है, पेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो रुई उनके नाक के पास रख के देखा कि थोड़ा सा सांस आ रहा है, तो उनको धैर्य हुआ कि अभी तक ये सुंदर सन्यासी जीवित है। तब उन्होंने देखा कि ये जो इनके मूर्छा जो इनकी है, ये एक महाभाव का स्तर है। ये तो सिर्फ भगवान के बिल्कुल निज परिकर जो होते हैं, जो एसोसिएट होते हैं, मुख्य रूप से गोपियां, उनमें ऐसे लक्षण निकल सकते हैं, आ सकते हैं और कहीं नहीं आ सकते हैं। तो ये श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शुद्धिपत सात्विक एई नाम ये प्रलय। प्रलय का मतलब होता है मूर्छित होना। प्रलय का मतलब उसके लिए दुनिया सारी समाप्त हो गई। वो भगवान के प्रेम में इतना तल्लीन हो गया कि उसको दुनिया दिखाई नहीं दे रही। इसको कहते हैं प्रलय। वो प्रलय क्या है? शुद्धिपत सात्विक। शुद्धिपत सात्विक। तो ये शुद्धिपत जो शब्द है, इसके ऊपर कमेंट्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ने की है, वो हम पढ़ेंगे। और फिर चको कह रहे हैं, नित्य सिद्ध भक्ते से शुद्धिपत भाव है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं ऐसे भाव जो इस वक्त चैतन्य महाप्रभु के श्री विग्रह में दिख रहे हैं, सारी श्री उनके दिव्य शरीर में दिख रहे हैं, ये केवल शुद्ध भक्त जो भगवान के होते हैं, नित्य सिद्ध। जब नित्य सिद्ध आता है तो हमको 3 प्रकार के सिद्ध का जानकारी शास्त्र से मिलती है। एक साधना सिद्ध, जैसे हम सब साधना कर रहे हैं तो एक दिन भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से सिद्धि प्राप्त होगी। साधना भक्ति करते हैं सिद्ध भक्ति को जागृत करने के लिए। सिद्ध भक्ति हमारे अंदर में पहले से पड़ी हुई है, उसको जगाने के लिए साधन करते हैं। तो हम अब जो कर रहे हैं इसको कहते हैं साधन भक्ति। और साधन भक्ति 2 प्रकार की है। कौन से? साधन भक्ति 2 प्रकार की है। कौन से? वैदिक साधन और राग अनुगा साधन, दोनों साधन भक्ति है। और जो इस वक्त हम भक्ति कर रहे हैं वो वैदिक साधन भक्ति कर रहे हैं। हम रागनों का भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं। रोज तुलसी पूजा करते हैं, क्या गाते हैं तुलसी पूजा में? दियो कुंजवास। तुलसी कौन है? तुलसी देवी, वृंदा देवी भगवान की सखी है, गोपी है। तो हम तो उसी को प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा कृष्ण के चरण की और कुंज का विहार, ये इसी को रागनों का भक्ति कहते हैं। तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है। हम रोज कर रहे हैं, ये रागनों का भक्ति, ये रागनों का साधन इनबिल्ट है हमारे वैदिक साधन में। लेकिन इसका पता हमको कब लगेगा? जब निष्ठा तक हम पहुंचेंगे। आदौ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति जब हो जाएगी और निष्ठा में प्रवेश करेंगे, तब रागनों का साधन करने का अधिकार होता है। उससे पहले रागनोदा का कोई दिखावा करेगा तो सहजिया कहलाएगा। कर रहे हैं हम, लेकिन अभी तक हम उसको समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम अनर्थ निवृत्ति से ऊपर नहीं आ पाए हैं। और प्रायः भक्तों का सबसे ज्यादा समय अनर्थ निवृत्ति में लगता है। और इसलिए एक हमारा जीवन का अनुभव है, अनर्थ निवृत्ति के लिए सबसे सुगम,
सबसे आसान, सबसे श्रेष्ठ एक ही साधन है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर भक्तिर्भवती नैष्टिकी। अगर श्रद्धा पूर्वक हमने भागवत रोज श्रवण करने का नियम बनाया तो तत्काल ही निष्ठा तक पहुंच जाएंगे। ये श्लोक भागवत का हम पढ़ते हैं तो भागवत से रोज पहले हैं, लेकिन ये मुख्य असल में सबसे आसान निष्ठा तक पहुंचना और अनर्थ निवृत्ति करने का साधन है नित्य भागवत सेवा। अब ये दूसरी बात है कि ऐसी परिस्थिति में हम नित्य भागवत सेवा नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी किस तरीके से नित्य भागवत सेवन कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। कैसे भी श्रील प्रभुपाद का भागवत का प्रवचन, अपने गुरुदेव का भागवत का प्रवचन, कोई आपके जो आपको प्रिय लगता है, जिसको आपको कान में आसानी से सुनने में आता है, समझ में आता है अपनी भाषा में, दिन में एक टाइम निकाल कर आधा पौना घंटा भागवत सुनने का रोज नियम बना लो। पढ़ने का नियम बना लो वो तो और बात है, लेकिन सुनने का नियम तो बना सकते हैं। ये पंचांग भक्ति जो है, जो बहुत प्रबल भक्ति है, जो भाव भक्ति तक ले जा सकती है, सिद्धि को प्राप्त कर सकती है, पंचांग भक्ति, उसमें एक मुख्य है भागवत का नित्य रसास्वादन करना। ये भागवत और ज्यादा जल्दी फल देती है जब भागवत भक्तों के संग में श्रवण किया जाए, और ज्यादा ये भागवत का श्रवण फलीभूत होता है, रिजल्ट देता है जब ये भगवान के मंदिर में हो, भगवान के श्री विग्रह के सामने हो। उससे भी ज्यादा ये अति तत्काल लाभ देता है जब भगवान के धाम में हो। है तो भागवत भक्तों के संग में हो, भगवान के मंदिर में हो और भगवान के धाम में हो। वैसे भगवान का मंदिर है तो भगवान का धाम ही है, तो इसका फल बहुत जल्दी आता है। तो हमारी भक्ति अपने आप राग अनुगा में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहां नित्य सिद्ध की बात कर रहे थे। नित्य सिद्ध वो होते हैं जो भगवान के धाम से आते हैं। दो ही प्रकार के भक्त हैं, नित्यबद्ध, नित्य सिद्ध। नित्यबद्ध भौतिक जगत में है, नित्य सिद्ध भगवान के धाम में है। अब आपके विचार में नित्य सिद्ध ज्यादा है कि नित्यबद्ध ज्यादा है? नित्य सिद्ध ज्यादा है, नित्यबद्ध कम है। अब मैं आपसे और प्रश्न पूछता हूं, आप उसका उत्तर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहां जेल में लोग ज्यादा हैं कि बाहर ज्यादा हैं? बाहर ज्यादा है ना। बाहर ज्यादा है वो है नित्य मुक्त, जो जेल में है वो नित्यबद्ध। तो ये भौतिक जगत में है नित्यबद्ध, वो थोड़े हैं, और भगवान के धाम में ज्यादा है नित्य सिद्ध, वो तो ज्यादा उधर है, इधर कम है। तो नित्य सिद्ध ज्यादा होते हैं, लेकिन वो है नहीं यहां कोई एक आधा आता है जैसे प्रभुपाद की तरह, कोई ऐसे शुद्ध भक्त, और ऐसे होते हैं धरती पे हर समय होते हैं। और दूसरे होते हैं साधना सिद्ध, जो हम नित्यबद्ध हैं, वो गुरुजनों का शरण लेके परंपरा के गत से माध्यम से जब साधन करते हैं तो हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तीसरे को कहते हैं कृपा सिद्ध। क्या कहते हैं? साधन कुछ नहीं किया, बस किसी भगवान के प्रेमी भक्त की कृपा हो गई और ऐसे आशीर्वाद दे दिया और उसकी भक्ति में भाव आ गया अपने आप। ये कृपा सिद्ध कहलाते हैं। ये बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं जो बिना साधन, आपको कभी देखा नहीं उस जीवन में साधन किया है, लेकिन बहुत ऊपर के स्तर पे अपने आप पहुंच जाते हैं।
उसको कहते हैं कृपा सिद्ध। वैसे तो भले नारद भले साधन किया है, तो साधन में फिर भी उसके ऊपर कृपा की, भक्ति वेदांतों को जल्दी ही उसको भगवान की अनुभूति हो गई। अब 5 साल का बच्चा क्या साधन करेगा, तो कृपा ही हुआ तब उसको सिद्धि प्राप्त हुई ना। तो ऐसे कुछ सिद्ध कृपा से होते हैं, लेकिन ये जो लक्षण है ये केवल नित्य सिद्धों में मिलते हैं। अब श्रील प्रभुपाद का मैं I think last time we were having this class in English, right? So upon seeing the signs of Sudipat, Satvik, Sarvabhauma Bhattacharya could immediately understand the transcendental ecstatic transformation in the body of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Such a sign takes place only in the bodies of eternally liberated devotees. The word Sudipat, Satvik, is explained in the following way by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Bhakti Rasamrita Sindhu mention 8 kinds of transcendental transformation in the bodies of the advanced devotees. Ashta Satvik Vikar. नाम सुना है? अष्ट सात्विक विकार. अष्ट means 8. Satvik means this satvik is not mode of goodness. This is the stage of bhav bhakti. भाव भक्ति में 8 types of transformation body में होती है. आपको भी कभी कभी होती है, रोज नहीं होती है. कभी कोई कथा सुनते हुए आंखों से आंसू आ जाते हैं. टीयर्स रोलिंग डाउन ऑन द चीक इज ए अष्ट सात्विक भाव. रोमांच होना, हेयर्स स्टैंडिंग ऑन द एंड्स. वॉइस चोक होना, इसको कहते हैं कीर्तन की सिद्धि. नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति. When we chant Hare Krishna, when the tears roll on the cheek and when the voice choke and when the hair stand on end, when I in ecstasy dancing, becoming unconscious, these are the Ashta Satvik Bhav. It's called Ashta Satvik Bhav. Why? Because they only appear at the stage of Bhav Bhakti. Glimpses can be seen even in a new devotees, but they will not be sthai. They will not be stable. They will just come and go. So Ashta Satvik Bhav, these are 8 Satvik Bhav. They appear in a liberated souls or in a very advanced devotees. But they are not the ultimate criteria of a Bhav Bhakti. Why? Good actor can imitate all this. Good actor can imitate all these bhavs, right? Or advanced devotee may suppress all these bhavs in front of public. Prabhupada, Srila Prabhupada, one day when he started chanting Radha Madhava, Radha Madhava Kunja Bihari, and then tears were rolling on the cheek and voice choked and he could not speak after Radha Madhava, and there was no class. And then was Kirtan and that's the end. So then Prabhupada told to the devotees, I'm not doing it. Prabhupada told them, I'm sorry, I'm not doing it, often it happened. It means he was always suppressing his sattvic bhav in a public. He was always suppressing, not allowing to manifest. So the advanced devotee can suppress all these bhav. Therefore, there are some other 9 symptoms of a bhav bhakti.
that nobody can imitate. भाव भक्ति के 9 और 9 क्राइटेरिया है इन अष्ट सात्विक भाव से अलग, separate from these अष्ट सात्विक भाव. Anybody remember at least? You tell me 3 out of 9. Say that is like 33% passing marks in an old system. भक्ति शास्त्री आप में से बहुत लोगों ने किया है नहीं? Because अष्ट सात्विक भाव itself, 9 other bhav are important. There is only one verse in which there is a 9 words are there. Avyakta kalatvam is number 1. Now you got a hint. This is number 1. Avyakta kalatvam. What is the meaning of avyakta kalatvam? Not wasting a moment. Always busy in service of Krishna. Avaryat kalatvam is number 1. 3 बताओ पासिंग मार्क के लिए. हाँ, अभी सब मोबाइल को ऐसे करेगा, निकालेगा अंदर से, गूगल गुरु के सहारे. What? No, Bhayanak is one of the secondary mellows, secondary bhav. नाम गाने सदा रुचि. कहां से निकाला? दिमाग से निकाला. नाम गाने सदा रुचि. Always having a eagerness to chant holy name. That is right. एक और बताओ तो ये सब पूरा ग्रुप 33 मार्क्स मिल जाएंगे इसको. Third one. या उत्कंठिता. Enthusiasm. उत्कंठिता. Uttkantita, always enthusiastic for the service, hearing and everything. 33 हो गए. So आज का आपका होमवर्क है, ये 9 चीजें निकाल के रखो. You keep these 9, write on a paper, keep in your pocket, and whole day remember these are the 9 symptoms of Bhav Bhakti. Why it is necessary? It is necessary to examine yourself where we are. And number 2, you can recognize the person in a Bhav Bhakti if you know that these are the criteria. For our own observation, personal observation, it's called Swadhyaya. Swa means oneself and Adhyan means understanding oneself where I am. So anyway, it's good. और भी है, आशा बंद है. और क्या? Vrakti, yes. Vrakti is number 2 in a list. Shanti, yes. अब मिल गया उसको, गूगल मिल गया. Vrakti, Shanti, yes. This is a full verse in Bhakti Rasamrita Sindhu. Better is instead of writing 9, if you write the whole verse and you memorize, that will be easy. If you remember 1, 2, 3, you may forget, but if you remember verse, it will be easy. Avairata kalatvam vrakti shanti utkantha asha badha sada nama ruchi is something like that. There's a full verse. So ashta satvik bhav are the symptom of bhav bhakti. Now, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj writes, they are sometimes checked by a devotee. Devotee don't manifest those symptoms. And there are 2 stages of such checking. So devotee want to check it, but there are 2 stages. Technically known as Dhumaita. Dhumaita? Anybody can guess what is the meaning of Dhuma? Last time I said this word. Smoky, smoke. Dhuma means? Dhumarpan means smoke, right? Smoky stage. Smoky stage means there is a fire you can't see, you can see only smoke. So one stage is called Dhumaita.
technically known as Dhumayata, and the other one is called Jwalita. Jwalita means you can see the fire. So fire covered with the smoke, and the Jwalita, the fire which is manifest. So these are the two stages of what? Ashta Sattvic Bhav. Devotee is in Bhav Bhakti. He is in ecstasy, but he is trying to control in front of public. Any example it's coming in your mind? When Chaitanya Mahaprabhu wanted to control his ecstatic bhav, when he saw the Ramananda Raya taking bath at Godavari, he said, all these Pandita, they are smart, and if I have the bhav, they will misunderstand. So he controlled those bhav. At that time, he controlled those bhav. And Srila Prabhupada, oftentimes, when even giving class, he was ecstatic, he was trying to control those bhavs. So in control, there are two stages, Dhomayaka and Jwalika. Dhomayata stage is exhibited when only one or two transformations are highly present and it is possible to conceal them. It means sometimes tears are coming, but somebody starts with very quickly. It is possible. Many times, most of you devotees also have this experience. Sometimes your just tears are coming, or sometimes you feel like that, but then you control it because of the public opinion or yourself. So that's called Dhomayata. When one or two symptoms they manifest, but they are easy to conceal. You can आप उसको छुपा सकते हो. And then when the more than 2 or 3 transformation are manifested, and it is still possible to conceal them, although with great difficulty, this stage is called Jwalita. Not more than 2. More than 2. So usually first is crying generally. And second is hair standing on end. So third is dancing in a public and chanting loudly. But still they can be concealed. But they are very apparent. That is Jwalita. When the 4 or 5 symptoms are exhibited, when more than 3, 4 or 5, it's called Deepit. Deepit, which means blazing stage has reached. When 5 or 6 or all 8 symptoms are simultaneously manifest, that position is called Udipat, which means inflamed. Prabhupada writes inflamed. It means he is now unconscious. He is almost unconscious, chanting, dancing and crying, and then he became unconscious. That is called Udipat. And when all 8 symptoms are multiplied 1,000 times and are all visible at once, the devotee is in Sudipat, intensely inflamed stage. Nitya Siddha Bhakta indicate extremely liberated associate of Lord, and such devotee enjoy the company of the Lord in 4 relations: servant, friend, parent, and conjugal love. What Srila Prabhupada has given purport is that Chaitanya Mahaprabhu was in the Sudipat stage, and Sarvabhauma and Bhattacharya understood this. So it means he was knowledgeable. He understood the Mahaprabhu's position was Sudipat. It means he is eternal associate of Lord. And then Prabhupada gave the 4 varieties of eternal associates: servitude, friendship, parenthood, and conjugal. These are the 4 type of eternal associate. And these eternal associate of Golok Vrindavan only. And what is the technical name for that? Eternal associate of Golok Vrindavan of Sri Krishna in these 4 mellows, they are technically called
Rag Anuga Bhakti is, what is the definition of Rag Anuga Bhakti? To spontaneous love is a one definition. To Rag Anuga Bhakti means to follow Rag Atmika Bhakta. Rag Anuga Bhakti is to follow in the wake of the Rag Atmika Bhakta. And all these Nitya Siddha are called Rag Atmika Bhakta. All the Nitya Siddha Bhakta which are coming from Golok Dham are parents like Nanda Baba and Yashoda, friends like Shubal and Sridhama, servant like Raktak, Patrak, Chitrak, and the conjugal lover like Vishakha, Lalita. They are called Rag Atmika Bhakta. Rag Atmika Bhakta, right? Is it okay? I think it is a revision of your Bhakti Rasamrita Sindhu. And Rag Atmika Bhakta is of two types. Rag Atmika Bhakta is of two types. Bolo? Yes. What? Kamano. Kam Atmika and Sambandha Atmika. Kam Atmika means conjugal lover and Sambandha Atmika means the other three. They are of two types. And then those who follow them, they are called Kam Anuga and Sambandh Anuga. It's too difficult. It's a revision, but it's too technical. But it is actual, this is what we have to practice. This is the 4 book in Bhakti Shastri, they are meant for two reasons. Why they are put 4 books. The 2 books particularly, they tell us the goal. What is the sadhya? What is the goal? So Isha Upanishad and Bhagavad Gita tell us the goal of our life. Goal is Krishna. And then the sadhan to achieve the goal, there are 2 books, Nectar of Devotion and Nectar of Instruction. How to practice bhakti to achieve the goal. So practically goal we know, but how to achieve the goal, that is very delicate, which we have to do. So we have to really technically understand this, what we have to practice, right? इसकी जरूरत है कि नहीं, लगता है कि नहीं? एक बार पढ़ने से नहीं होता है. I am telling you, once you may pass Bhakti Shastri, it will never stick in your mind. आप में से बहुत से भक्तों ने, many devotees have done Bhakti Shastri, right? Many have done. All these words you know now, but it's not because we are not practicing it. Because we are not at that level. हमने theoretical पढ़ लिया है, लेकिन हमारे वो प्रैक्टिस में नहीं आ रहे हैं. अब ये 2-3 जगह पे ऐसी चीजें हैं. It is better really to make our this should be our clear understanding. और हमारे पास है क्या? This is the only philosophy which is our weapon by which we will conquer the Maya. अगर हम इस भौतिक जगत से हमको, if we have to live in this world and we have to conquer the Maya, these are our actually weapons. ये शास्त्र ही हमारा, शास्त्र और शस्त्र एक ही बात है. शस्त्र and शास्त्र is same thing. So we have to thoroughly, it's not memorize and understand, but we have to internalize it. अंदर में इस बात को क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए. कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. ये बहुत जरूरी है. अब आगे का श्लोक पढ़ रहा हूं. ये और इससे भी और ऊपर फिलॉसफी, ये भक्ति रसामृत सिंधु से ऊपर की फिलॉसफी. भक्ति रसामृत सिंधु में कहां तक पहुंचना है? लव ऑफ गॉड तक. व्हाट इज द गोल ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु? टू रीच टू द लव ऑफ गॉड. ठीक है. आदव श्रद्धा से लेकर, फ्रॉम द आदव श्रद्धा टू प्रेम. एंड आफ्टर प्रेम देर आर ऑल्सो 8 stages. That Srila Rupa Goswami has given in Ujjwal Neelamani. There's Ujjwal Neelamani. He has described Bhava Prema Sneha
Bhav, after the bhav there is a prem, after the prem there is a sneha, and after the sneha there is a pranaya. And after pranaya there is a rag, then anurag, then bhav, then mahabhav. I mean, I'm just giving you little, I'm trying to make you enthusiastic and develop interest to know all this. जो दास से भक्त है ना, उसमें स्नेह और अनुराग तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है. This is limit. After prem, das bhakt will not go beyond that. Sakha bhakt will go in pranaya. Pranaya का मतलब, what is the meaning of pranaya? Radha hai Krishnera pranaya vikara. What is the meaning of pranaya? There is no difference between the lover and beloved. एक जैसे. In friendship this pranaya is early. अरे कृष्ण का सखा क्या बोलते हैं? अरे तू कौन सा बड़ा है, जैसा तू वैसा मैं. So they think we are equal. The friends of Krishna, they say we are equal. So pranaya सखा में है. वात्सल्य में राग है, अटैचमेंट है, लेकिन भाव महाभाव सिर्फ माधुर्य में और किसी में नहीं. ये जो ऊपर के अब ये मैं श्लोक पढ़ने जा रहा हूं. अधिरूढ़ भाव यार ताए विकार. अधिरूढ़ भाव जिसमें होगा उसमें ये सब विकार दिखाई देंगे. मनुष्य देह देखी बड़ा चमत्कार. हाउ इट इज पॉसिबल इन ए ह्यूमन फॉर्म. Sarvabhauma Bhattacharya consider the uncommon ecstatic symptom of Ati Ruda Bhav are appearing in the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is very wonderful. How are they possible in the body of a human being? So, Adi Rudaya, the word is Adi Rud. Adi Rud. Adi generally means, have you heard word Adi? Adi means below. And the temple president is called, in Hindi, Adhyaksh. Adhyaksh. Adhyaksh means everything is under his eye. Aksh means eye. Adi means below. So everything is in his vision. What is happening is under his vision. And Krishna is Maya Dhikshena Prakriti. This material world is working under my supervision. That Krishna is Adhyaksha of this whole world. So Adhyaksha, the word is Adi. Adhirudha. Adhirudha bhav is ecstasy technically known as Adhirudha. Adhirudha bhav or Adhirudha Mahabhav is explained by Srila Rupa Goswami in his Ujjwal Nilmani. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur quotes Srila Rupa Goswami as follows. Loving propensity of a Ashtarya. And now these two technical words more are coming. Ashtarya and Vishay. Hare Krishna. आप लोग you have heard these two words, Ashtarya and Vishay? Ashtarya and Vishay. आश्रय इज डिवोटी, विषय इज कृष्ण. हमारी भक्ति का विषय क्या है? कृष्ण. हम क्या है? आश्रय. डिवोटी इज आश्रय, कृष्ण इज विषय. सो आश्रय और विषय, ठीक है. ये टेक्निकल टर्म है, आगे बहुत आएगा. ये विषय आलम्बन, आश्रय आलम्बन. आज इतना ही टेक्निकल हो रहा है. शुक्रवार को आपको ऑफिस तो जाना नहीं है. आपके दिमाग को इतना मैं खराब कर दूं जितना ऑफिस में नहीं होता है. आपने रस सुना है? भक्ति का रस सुना है? भक्ति रस. रस मीन्स मेलो. ये रस बनता कैसे है? भक्ति का रस कैसे बनता है? हाउ भक्ति रस मैनिफेस्ट. अच्छा, मैं ऐसे कहूं कि आपको कोई और जूस निकालना हो. रस का मतलब जूस है. मैं कहूं कि भाई मैंगो का जूस निकालना है तो क्या क्या चीज चाहिए आपको? एग्जाम्पल पूछ रहा हूं.
हाँ, मैंगो चाहिए और जूसर चाहिए और निकालने वाला आदमी चाहिए और बर्तन चाहिए जिसमें निकले और फिर पीने वाला चाहिए। कितने हो गए जूस में? कितने हो गए? देखो कितने गिनो, 5 हो गए ना। तो आप आज ये याद कर लो और लिख लो, भक्ति के रस के लिए भी 5 चीजें चाहिए, तब रस बनता है। पहले को कहते हैं स्थाई भाव चाहिए, जैसे मैंगो है, स्थाई भाव चाहिए। स्थाई भाव का मतलब आपका सखा भाव है, दास्य भाव है, यू हैव वट एवर दी भाव, दैट स्थाई भाव वी हैव रीच्ड। अब स्थाई भाव के ऊपर, व्हेन ऑन द स्थाई भाव 4 अदर भाव मिक्स विद द स्थाई भाव, देन द रस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो उन 4 का नाम मैं बता दूं आपको। वह फर्स्ट क्या हो गया मैंगो की जगह पे? स्थाई भाव। देन यू नीड सेकंड विभाव। व्हाट यू नीड? विभाव इज कॉल्ड स्टिमुलेंट। विभाव इन इंग्लिश इज स्टिमुलेंट। ये मिक्सी हो गया जिसमें घुमाना पड़ेगा, राइट? स्टिमुलेंट कैसे? इसका व्हाट स्टिमुलेंट मीन्स? अब मैं कहूं कि 9 बजे है, 9:30 बजे तक क्लास खत्म होगी, तो बाहर प्लेट का आवाज सुनाई देगा, तो स्टिमुलेंट अंदर क्या कहेगा? प्रसाद। सो फॉर द प्रसाद द स्टिमुलेंट इज प्लेट का आवाज आना। और कीर्तन का आवाज होता है तो इससे प्रवचन होने वाला है, तो 2 ही आवाज है तो वो भी खड़खड़ ऐसा ही है, लेकिन ये खड़खड़ कहता है बैठना पड़ेगा, वो कहता है खाना पड़ेगा। तो स्टिमुलेंट इज डिफरेंट फॉर द 2। तो उसको क्या कहेंगे? विभाव। ये 2 हो गए ना। अब तीसरे का नाम याद करो, अनुभाव। अनुभाव का मतलब वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन का मतलब यह है कि आपने थाली का आवाज सुना खड़खड़ का, तो अब आप क्या करोगे? उठोगे और जाके अपनी जगह पे बैठोगे, रेडी हो जाओगे। तो अनुभाव का मतलब वॉलंटरली यू हैव टू एक्ट टू अचीव दैट रस। अनुभाव। और चौथा क्या है? सात्विक भाव। ये जिसकी बात अभी कर रहे हैं आज, सात्विक भाव, यह है इनवॉलेंट्री, इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। और 5वां विभिचारी भाव। ये कौन कह, कौन पढ़ा? कौन बोल रहा? पढ़ा कहां? पढ़ा क्या? कहीं कब पढ़ा? हाँ, संस्कृत में पढ़ा है। ओके, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द नाट्य शास्त्र। दिस इज फ्रॉम द नाट्य शास्त्र बाय, कौन से शास्त्र में पढ़ा है? किसका है? क्या नाम? भरतनाट्य शास्त्र में। इसमें जो मेन आचार्य है जिसने लिखा है, श्री रूप गोस्वामी has taken all from that. All this technical world, श्री रूप गोस्वामी has taken from that नाट्य शास्त्र of भारत मुनि। भारत मुनि, आप देखो, फ्रॉम डिफरेंट एंगल। शी हैज नॉट रेड दी भक्ति रसामृत सिंधु, नहीं पढ़ा है, लेकिन ये नाम इनको आ रहे हैं। तो कितने हो गए? याद करो, बताओ। पहला स्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा सात्विक भाव, 5वां संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। संचारी, दे आर 33 in number and they are coming and going. संचारी और व्यभिचारी भाव, they are coming. When they all mix together, then juice is produced. अच्छा है ना दिमाग खराब करने के लिए। इसका बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, मेरे पास अभी है नहीं। वो बीच में स्थाई भाव है और 4 ऊपर उसको ऐसे एरो है, उसके ऊपर नीचे रस
निकल रहा है जूस, पीने वाला कोई पिए तो then he can relish it. So I mean this is necessary actually. अब हम कर क्या रहे हैं? भक्ति के रस के लिए प्रयास करें, हमें पता ही नहीं है रस बनता कैसे है. ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए हमको? फ्राइडे के दिन तो ऐसे चल सकता है ना, अदर डेज में नहीं, लेकिन फ्राइडे में ये बात चल सकती है, राइट? और इनका अपना ऐसे अनुभव के ऊपर पूरा समझने का, अनुभव में आलिंबन होता. मैं व्हाई आई यूज दिस वर्ड, बिकॉज आश्रय एंड विश्रय इज ए सब्जेक्ट ऑफ विभाव. विभाव हैज टू अदर. विभाव इज आश्रय एंड विषय, एंड देन देयर इज ए आलिंबन. This is more technical, not we are doing today, but now I am reading this. The loving propensity of the Ashraya, devotee, towards Vishaya, Lord, becomes so ecstatic that even after enjoying the company of the beloved, the devotee feels that his enjoyment is insufficient. At such a time, the lover sees the beloved in different ways. Such a development of ecstasy is called anurag. Anurag. And when anurag reaches its highest limit and becomes perceived in the body, it is called bhav. When the bodily symptoms are not very distinct, however, the emotional state is still called anurag, not bhav. When the bhav ecstasy is intensified, it is called mahabhav. The symptoms of mahabhav are visible only in the bodies of eternal associates like gopis. So mahabhav stage, anurag, rag, anurag, bhav, mahabhav. So these are the stages only in the conjugal love, not in the other. Even vatsalya में भी नहीं है ये. अधिरूढ़ महाभाव ठाकुरानी राधा. Sir, अधिरूढ़, this word अधिरूढ़, which is in this verse, this is only applied to Radharani. अधिरूढ़ महाभाव राधा ठाकुरानी. She is only the last limit of the love of God. अधिरूढ़ भाव उसमें होता है और किसी में नहीं होता है. और चैतन्य महाप्रभु कौन से भाव में? चैतन्य महाप्रभु is in the भाव of Radharani. And therefore this Adhirudh Bhav word is used here, Adhirudh Bhav. And Sarvabhauma understood this. So how intelligent he is. But still he has no love of God. Uddhav was also very intelligent and minister of Krishna, but still he has no Krishna prem. So he was sent to the Vrindavan to learn from the gopis. And here Sarvabhauma Bhattacharya is learning from the directly Chaitanya Mahaprabhu who is in Radha Bhav. Can you, in दोनों को, can you correlate this like that? Uddhav learned the Krishna prem from the gopis, including Radharani. And Sarvabhauma Bhattacharya is learning the Krishna prem from Chaitanya Mahaprabhu who is in a Radha Bhav. So like the Uddhav is a disciple of Brihaspati and he is Brihaspati himself. Both are exalted devotees, but still they need Krishna prem. That is not possible without the mercy of the eternal associate of Krishna. Now, next verse, now it is simple. Now simply we are going. Murchita haila chetana na hai sarira sarvabhauma laya gela apane ghar. Now, everywhere this is a news that there is a beautiful sannyasi. He came to visit Chaitanya Jagannath temple and he become unconscious and Sarvabhauma Bhattacharya has taken him to his house. And then what happens? Then it says, Atachinti Bhattacharya Achena Basiya Nityananda Singh Dware Malile Aisha. So when this news spread everywhere, by that time Nityanand Prabhu and Mukunda Datta and they reached to the main gate of the Jagannath Puri Singh Dwara. And they heard from the people that there was a beautiful sannyasi, he became unconscious. They understood this is Chaitanya Mahaprabhu.
So they got this news from the public around. And ताई सुनी लोग कहे अन्यो अन्य बात, they were telling, oh, this happened like this happened like this. And then at that time, Mukanda Sahita Purve Ache Parichare Mukanda Deki. Now there's a one name coming. You want to know the one name? Nadiya Nivasi Visharadhaira Jamata. Nadiya Nivasi Vishadera Jamata Mahaprabhura Bhakta Tehu Prabhu Tattva Gyata. Now this is the name of a person. The name of person is told in such a lengthy way. Nadiya Nivasi. The first word is, he was the resident of Navdeep, Nadiya. Vishardera Jamata. Jamata means son-in-law. Vishardera means Visharad. And then Mahaprabhura Bhakta, and that person is a great devotee of Mahaprabhu. And then Tehu Prabhu Tattva Gyat, and he was knowing about Mahaprabhu's Tattva. There are 4 words used for one person. एक आदमी होटल में गया कमरा लेने के लिए. But I need a room in a hotel. Say, what is your name? Say, Haji Hasham Qazi Qasam Mia Maulvi Muhammad Yusuf. His name was Haji Hasham Qazi Qasam Mia Maulvi Muhammad Yusuf. इतने रूम होटल में नहीं है. Not so many rooms are not available in the hotel. ये एक आदमी का नाम है. And who is that man? Gopinath. His name is Gopinath Acharya. गोपीनाथ आचार्य कहां का रहने वाला है? नदिया निवासी. किसका जामाता है? हुस सन इन लॉ? विशारद. एंड भट्टाचार्य एंड सार्वभौमा इज सन ऑफ विशारद. सो गोपीनाथ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सार्वभौमा भट्टाचार्य. And then the third is Mahaprabhu Bhakta. So Gopinath is Mahaprabhu's great devotee, and he knows the Mahaprabhu's Tattva Gyata. He knows Mahaprabhu is Krishna himself. So 4, and then Prabhupada translated this. Gopinath Acharya was the resident of Nadia, the son-in-law of Visharda, and the devotee of Chaitanya Mahaprabhu. He knew the true identity of his lordship, Chaitanya Mahaprabhu. Maheshwara Vishard. Maheshwar Vishard was the classmate of Nilambar Chakravarti. Who is Nilambar Chakravarti? Sachi Mata's father. Sachi Mata's father is Nilambar Chakravarti. And Vishard is the classmate of Nilambar Chakravarti. He lived in the Nadia district in the village of Vidyanagar and had 2 sons named Madhusudan Vachaspati and Vasudev Sarvabhauma. His son-in-law was Gopinath Acharya. Is it necessary to remember all these names? Yes. They are connected with Krishna. Krishna Sambandha. Nirmanda Krishna Sambandha. This is our philosophy. We have no attachment with anything, but anything which is connected to Krishna is most important. Early days in ISKCON, Boston, in America, there was some court case, some problem in the temple, court case. So for evidence, there was a very simple devotee, Nanda Kumar. He was servant of Prabhupada for some time in cooking for Prabhupada. He was too innocent. He was called in a witness box. He said, tell who was at that time when this incident happened. And he was just blank. He said, what can I say? Then he thought, oh, yes, there was Gopinath, there was Radhanath, there was Giriraj, there was this, there was this. He told 5, 6 devotees' names. As soon as he chanted the names of the devotees, he was enlightened from inside and he gave the verdict in the court and we won the case. So then he realized that simply by chanting the name of the devotees,
By chanting the name of the devotees, Krishna will be pleased and he will give you intelligence to be successful and victorious. तो इन भक्तों का नाम लेना बहुत बड़ा काम का है. Remember all these names, they are very powerful names. Yesterday I was telling you, tell somebody's name. छोटे बच्चे का नाम लेते हैं, how he happy? If you call somebody by name, how he will be happy? होगा कि नहीं होगा? क्या नाम इसका? इसका नाम क्या है बच्चे? हाँ, माधव. माधव. हाँ, माधव. Say smiling. इस दुनिया में किसी का नाम लेते हैं वो खुश होते हैं, तो कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण कितना खुश होगा. You think really how it is going to, he is going to be happy. और कृष्ण के भक्त का नाम लेंगे तो कृष्ण और हैप्पी होगा. Krishna will be more happy when we chant the name of his devotees. Aradhanam sarvesham Vishnu aradhanam param tadiyanam. Tadiyanam means those who are connected with Krishna. So these all are connected with Chaitanya Mahaprabhu. I don't know, maybe we should have a regular, remember, I'm just telling personally, when every day when I chant Vancha Kalpatrubhyas in the morning, at least I remember, you can say 30, 40, 50 names of the devotee who have somehow in my life influence in my Krishna consciousness. At least I just Vancha Kalpatrubhyas, then I say this. I just chant at least minimum 35, 50, 40, 50 names every day. This is my regular practice. But in my life, who has helped me, who has given me opportunity to serve, to preach. So all these are regularly. It's not technically Vancha Kalpatrubhyas and Jan Chut Gayi nahi. So who are the Vaishnava actually? They have become a Kalpa Vriksha for you, and they have fulfilled your desires. And you count in your life, you will find those who brought you in ISKCON, those who are still assisting you, those who are facilitating you, those who are giving you opportunity and facilities. So you always actually, by a person you take your name, this will give you satisfaction and Krishna will be pleased by that. So Gopinath Acharya, Nilambar Chakravarti, Maheshwar Visharad, then Madhusudan Vachaspati, Vasudev Sarvabhauma, then Mukanda Sahita Purve Ache Paricha, Mukanda Dekhyata, Haila Vismaya. So Gopinath was in Jagannath Puri and he saw the Mukanda. Mukanda is accompanying Chaitanya Mahaprabhu and they were knowing one another before. So he was surprised by how he is here. Mukanda Tahare Dekhi Kaila Namaskar. Mukanda offered Namaskar to Gopinath Acharya. This is also Shadvit Priti Lakshanam. कौन से 6 प्रकार के प्रति लक्षण है? Nectar of instruction. ददाति प्रतिगणन्ति भोजते भुंकते आख्याति प्रचति सद्विड प्रति लक्षणम. तो उसमें से, and after this what is the next verse? Krishneti. Next verse is Krishneti, one who chants the holy name of Krishna only. Adareta manasa, with mind you give respect. One dikshadi, one who is initiated, pay obeisance. So here Gopinath Acharya, because he is highly exalted devotee, Mukanda is offering obeisance or namaskar to the Gopinath. So when the two devotees meet, they should offer obeisance. It was a great tradition of the ISKCON in early days. मंगल आरती में जब भक्त आते थे ना, अब पर्दा बंद होता था, कर्टन बंद होता ना, the one who is coming, he was offering obeisance, and all were offering obeisance to him. This was a old tradition in ISKCON. The one devotee, once in a day when they meet first time, they used to offer obeisance to one another. Now this tradition is almost forgotten. क्या टाइम हो गया? अब दंडवत बोल के जान छुड़ाते. दंडवत.
everything has become short. Name is say, a very nice name. What I say? Beautiful name है किसी का, उसको हम बोलते हैं ओपी. ओपी ओपी क्या? ओटीपी. ओपी नाम बड़ा अच्छा है, ओम प्रकाश, लेकिन कोई पूरा नहीं नाम लेगा, थोड़ा सा नाम लेगा छोटा, ओपी. हम भक्तों के नाम में हमने ऐसे छोटे रख दिए, और छोटे में जो मुख्य नाम है वो भुला दिया है. नाम है साक्षी गोपाल दास, कहेंगे साक्षी कहाँ है? अरे साक्षी में काम नहीं है, गोपाल में काम है. नहीं, I'm saying this was the old culture that paying obeisance to the initiated devotees, because this was the part of the teaching of nectar of instruction. When you meet a devotee who is actually initiated by a bona fide spiritual master, one should offer obeisance immediately. ये important aspect है, वो आस्ते आस्ते कम हो गया है कि नहीं हो गया? आपको लगता है आपको once we meet once कम से कम आप तो once a week मंदिर में आते हो, तो ये एक रूल तो अपना लो. It will give a big benefit. Better when you meet some devotee first time in a day, offer respectful obeisances. This is good. This is a good practice. ये बता रहा है कि मुकुंदा ने गोपीनाथ को नमस्कार किया, और आगे लिखा है गोपीनाथ ने नित्यानंद को प्रणाम किया. If you do the obeisance, the other will do to you. Very simple. Now next, तेहु आलिंगन पूछे प्रभु र समाचार. When he paid obeisance, he embraced. The Gopinath embraced Mukunda. It means both offer obeisance to one another, and this is a Priti Lakshanam. And then Mukunda kahe Prabhu iha haila agmane. Mukunda said Chaitanya Mahaprabhu has come here, and Gopinath was very happy. And we are also accompanying Chaitanya Mahaprabhu. And at that time Nityananda Gosai Acharya Kaila Namaskar. Now Gopinath is offering obeisance to Nityananda. Sabhi mili pache Prabhura Varta Barabar. And everybody was asking about Chaitanya Mahaprabhu. Mukunda kahe Mahaprabhu sannyasa kila. And Mukund is telling to Gopinath, Mahaprabhu has taken sannyas. Gopinath was not knowing this. Nilachala Aila. And Mahaprabhu has come to Jagannath Puri. Sangyami Sabalaya, and he has brought us together. Ama Sabha Chhadiya Age Gela Darshane, and he left us behind and he ran for the darshan. Ami Shaba Pache Aila Tahara Avasheshana. Now we have come and trying to find him out. Anyo ane lokera mukhe ye katha sunila, and we have heard from the people, they are saying Sarvabhauma Graha Prabhu Anumana Kaila. Chaitanya Mahaprabhu is taken to the Sarvabhauma Bhattacharya's house. Ishwara Darshane Prabhu Prema Achetana. And then they heard that by seeing the Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu become unconscious. And Sarvabhauma la yagela apana bharam. And Sarvabhauma has taken him to his own bhavan, his own house. Tumara miline Prabhu amara haila mana dvaire se kshane paelo tumara darshana. अब गोपीनाथ कह रहा है, I was just thinking of you, and Krishna so arranged that I met you. Just I was thinking of meeting you, and by chance we have actually met. ये ये line छोटी है, लेकिन it has a great meaning. Meaning is that if you are a devotee and you think something in your heart, Krishna is within your heart as a super soul, he knows. And then he arranged that thing because he is also in the heart of a person you are thinking of. And he will bring him and you will meet. And we have seen this good experience always. Devotees have this, you think of something and Krishna arranged it. And this is a mechanism.
But this mechanism is most important. If you have, even if you have a difference with somebody, somebody is upset with you, then you just pray to Krishna. And sincerely tell to Krishna that I have not done anything to him, but he is still feeling something, offense towards me. Please kindly inspire him that I have nothing against him. And you pray to Krishna like this, that person's heart, Krishna will tell him that no, this person is actually not against you. And you will have a good relation in your own life. This is a very nice technique. There's one story, sometime I told you, I don't know. There was this young girl, she was always worshipping Gopal, Krishna. She became grown up, then she married, and husband was very faithful and loving, and their life was good. But in the house, she took her Gopal with her at home, and she was worshipping Gopal and praying to the Gopal. But the mother-in-law was a little tough, and she was giving a hard time to the girl, daughter-in-law, which is natural. Usually mother-in-law by nature are tough. ये सास जिसको कहते हैं ना, उसका नाम सास क्यों रख दिया है? जिसका नाम लेने से सांस बंद हो जाता है. सास. पंजाबी में मेरे को किसी ने कहा आपको पंजाबी आती है, आप में से कोई पंजाबी है क्या यहाँ? हाँ? पंजाबी है? ओके, सास किसको कहते हैं? सास कौन सी अच्छी? बोला चंगी हो नहीं तो दीवार पे टंगी हो. सास या तो अच्छी हो नहीं तो दीवार पे टंगी हो, मतलब चली गई हो. वैसे अच्छी वही होती है जो दीवार पे टंगी होती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट रियली. इसलिए बेटर ये है कि अभी आप जो सास बनने वाले हैं ना फ्यूचर में, यू चेंज द होल सिस्टम नाउ. Treat your in-laws as daughters, then the whole problem will be solved. Then when you become the mother-in-law, then the things will be changed. So change this system, otherwise this is a very old system which is very painful in the homes. We have seen the homes are hell because of that. Nahin? स्कूल की डेफिनेशन क्या है? स्कूल की पप्पा पे पप्पू प्ले. स्कूल किसको कहते हैं? पप्पा पे पैसा बाप देता है एंड चाइल्ड प्ले. दर्शकाल स्कूल क्या करता है? पढ़ता है नहीं, घूमता है. पप्पू पे प्ले, पप्पा पे. हरे कृष्ण. हाँ, टाइम तो हो गया नहीं? चले क्या? ओ, गोपाल की स्टोरी. अच्छा, पप्पू प्ले. और वेडिंग और वेल्डिंग में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेडिंग एंड वेल्डिंग? इन वेल्डिंग फर्स्ट देयर इज अ फायर एंड देन देयर इज यूनियन. पहले चिंगारी उड़ती है फिर मिल जाते हैं. और वेडिंग में पहले मिलती हैं फिर सारी उम्र में चिंगारी. ये डेफिनेशन अच्छा है, सही है, गलत है? टू सम एक्सटेंट इज राइट. So the mother-in-law was a little tough, so the girl, she went to fetch the water and she was crying while filling the water, and one saintly lady was there. She said, my daughter, why you are crying? She said, mother, what can I do? I want to really serve the joint family with love and affection. My husband is very nice and loving and caring, but somehow my mother-in-law is giving tough time. I'm not able to serve properly. Then the saintly lady told her, oh, you have your Gopal with you? Oh yes, I brought my Gopal. I am worshipping her. I am worshipping my Gopal since my childhood. Oh, then the saintly lady said, what, your Gopal is
in your mother-in-law's heart? Yes, he is in everybody's heart. Why is not in my mother-in-law's heart? मेरी सास की दिल में भी तो गोपाल है. अच्छा? Then you pray to your Gopal. There, my dear Gopal, to transform the heart of my mother-in-law, that we can jointly live and serve you very nicely without any disturbance. And your Gopal will definitely transform the heart of your mother-in-law. And she accepted this advice and she went and prayed to the Gopal, and within 2-3 days the heart of mother-in-law changed, and there was a whole atmosphere. And there is a story written in a big book, how wonderful was Prabhupada, one book, and this one story is in that book. The glories of Prabhupada, something like that. So this is a technical thing you take today with you, whatever the differences you have in family or friends or in profession, you just pray to the Krishna. And sincerely you pray, he will definitely make the relation a very malleable and loving relationship. Even if they are not good, they will become good. This is a technique. So Mukunda was thinking, and Krishna arranged. Gopinath was thinking of meeting Mukunda, and he just met Mukunda. Now they all will go to meet Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu by afternoon will come back to the consciousness, and then Gopinath. Now the main point is Gopinath. Then Sarvabhauma Bhattacharya will arrange the prasad from Jagannath Puri for all of them. Quite interesting messages or teachings are in this section, but I don't know how much we'll be able to cover this time. I think any question or comment? I'm sorry, I thought I will do 100 verses, but I am not able to do 10 verses. I'm not fit. Hare Krishna. बोलिए, कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? Yes, Prabhu. Yeah, many lifetimes bhakti janit sukriti will bring us near to the devotees, and when we take the advice and the instruction of the devotee, our devotion will start. Yes? We are all? No, after we become devotee, as soon as we become devotee, all the sinful reaction of many lifetimes are completely burnt. That's called klesha gani. Even in sadhana bhakti, all the many lifetimes sinful reactions are finished. That's called klesha gani. But even after becoming devotee, aparadhs are there. And aparadh will continue up till the stage of bhav. Even at the stage of bhav, there is a possibility of Vaishnava aparadh. So we have to be very careful in our sadhana to avoid aparadh as much as it is possible to avoid. So sinful reactions are over, but the aparadhs are there. So aparadh will continue. Anartha is aparadh. If we come to the association of devotees, there are so many chances to get this aparadh. So how we can deal with that? It's only Mahabhagavat is free from aparadh because he's not criticizing anybody. Shunya, what is the verse? Aparadha Shunya Hai. This is a bhajan. So when we will be free from the offense, envious mentality among the devotees. This is a Ninda Adi Sunya. This is Mahabhagavat is only one who is not criticizing any devotee. But the rest, most of the greatest and unintentional offense which devotee often comment is Vaishnava aparadh. Knowingly or unknowingly,
we criticize devotees. When we talk, we just talk something about, loose about the devotees. That unknowingly we do the aparadh. We should avoid. This Vaishnava aparadh is very dangerous, like a mad elephant aparadh. And a very tender creeper of bhakti will be completely destroyed by this aparadh. Guru avagya, these, and considering the demigod equal, this is not much. These aparadh we are not doing most of the time. But the Vaishnava aparadh and Naam, on the strength of Naam doing something wrong. I am chanting, therefore I can do this. These are the couple things which are so subtle, they are still in our life. Very difficult to be free from this aparadh. Again, we have to pray to the holy name that we should be free from aparadh, and holy name manifest its full blessing, then we can be really free from aparadh. Aparadhs are big stumbling block on our progress in Krishna consciousness. Even after taking initiation, the aparadhs are a stumbling block. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.